Welcome all. This is Kusum, and our today's topic is characteristics of radio, यानी रेडियो की विशेषताएं. As you all know, communicators use several media to transmit a message to the readers, listeners, or viewers. These media, film, print, broadcasting, are used differently by people for various purposes. Each mass medium has its own distinct nature and characteristics. For example, print medium like newspapers, magazines, etc. provide detailed information which can be kept for a longer period, assessed whenever needed, and used by many persons at a convenient time. Films can be watched and enjoyed at one single place by many people in a large or small groups or at homes through television sets. Broadcasting on radio and television can bring voices and pictures to a large number of listeners and viewers from long distance. आज अपने इस वीडियो में हम रेडियो की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे. So let's start. As you know, radio is an attractive medium among all the various mass communication media because of its special characters. Radio makes pictures. As you know, radio is a sightless or a viewless medium. In radio, either the performer or listener can't see each other. Therefore, it is called blind medium. रेडियो एक दृश्यहीन एवं दृष्टिहीन माध्यम है. रेडियो में कलाकार या श्रोता एक दूसरे को नहीं देख सकते, इसलिए इसे ब्लाइंड मीडियम कहा जाता है. Since it is a blind or sightless medium, the performer as well as listener has to creatively imagine each other so that as soon as voice comes out of the loudspeaker, the listener attempts to visualize what he hears and to create in a mind's eye the honor of the voice. आप समझ गए होंगे कि रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह श्रोताओं को अपने साथ लेकर चलता है. श्रोता अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं और रेडियो कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोताओं तक केवल प्रसारणकर्ता की आवाज पहुंचती है और श्रोता उसकी आवाज को सुनकर अपने हिसाब से अलग-अलग कल्पनाएं करते हैं. वह अपनी इसी कल्पना का उपयोग दृश्य जुटाने के लिए करते हैं और यह दृश्य हर एक श्रोता के मन में अलग-अलग बनते हैं. श्रोता का अनुभव संचार जितना विस्तृत होता है, उसके मन में उभरने वाले दृश्य उतने ही सजीव और विस्तृत होते हैं. नेक्स्ट है हमारा रेडियो की गति, द स्पीड ऑफ रेडियो. रेडियो इज द फास्टेस्ट मीडियम. इट इज इंस्टेंट. As things happen in a studio or outside, messages can be sent or broadcast. These messages can be picked up by anyone who has a radio set or receiver which is tuned into a radio station. It can report the event almost instantly as they are happening. So it is the medium of the here and now. Even for TV, it is more difficult to take the camera immediately to events as they are happening. But the radio is enormously flexible medium and is often at its best in the totally immediate live situation. Next है हमारा रेडियो एक सरल माध्यम है. अगर हम रेडियो की सिंप्लिसिटी की बात करें तो as compared to all other media, radio is simple to use. For program production, radio is much cheaper and simpler medium. Radio needs very simple technology and equipment. ब्रॉडकास्टर के लिए रेडियो की तुलनात्मक सरलता का अर्थ है इसके शेड्यूलिंग में लचीलापन. प्रोग्राम्स कैन बी शिफ्टेड, ड्रॉप्ड इवन एट अ शॉर्ट नोटिस. नेक्स्ट है हमारा रेडियो एक सस्ता माध्यम है. रेडियो इज इनएक्सपेंसिव. एज इट इज सिंपल, it is also a cheaper medium. The cost of production is low and a small radio can be bought for as low a price as say 50 rupees. ये काफी सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला माध्यम है. एक टीवी स्टेशन की तुलना में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने में बहुत कम लागत आती है. Also it is totally free to air. Next, रेडियो को चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होती. Radio doesn't need electric power supply.
You can listen to radio using dry battery cells, even you don't have electric power supply or a generator. So in a country like ours, where electricity has not reached everywhere, radio is a great blessing. हमारे देश में जहां हर जगह बिजली नहीं पहुंच सकी है, वहां के लिए रेडियो एक वरदान की तरह है। रेडियो रिसीवर पोर्टेबल होता है। A radio receiver is portable, means mobile medium. This facility of moving an object, which is called portability, gives radio an advantage. These days, if you have a car and a radio in it, you can listen to it as you drive or travel. लेकिन टेलीविजन के साथ आप आसानी से ऐसा नहीं कर सकते। आजकल तो आपके पास अगर कार है तो उसमें रेडियो लगाकर गाड़ी चलाते समय भी आप आराम से इसे सुन सकते हैं। रेडियो कैन accompany and entertain anywhere. One can have it at home, at picnic resort, while driving or at any occasion. Radio has no boundaries. यानी रेडियो की कोई सीमा नहीं होती। Radio signals has no terrestrial limits. Its signal can clear mountain barriers and may cross ocean deeps. यानी रेडियो सिग्नल पहाड़ की बाधाओं को दूर कर सकता है और समुद्र की गहराइयों को भी पार कर सकता है। रेडियो सुनने के लिए अक्षर ज्ञान आवश्यक नहीं होता। खासकर विकासशील देशों में इसकी भाषा सरल, जीवंत और सीधी होने के कारण यह अनपढ़ और अर्धसाक्षर लोगों तक पहुंच सकती है। Especially in developing countries, with its language being simple, live and direct, it can reach illiterate and semi-literate people. For a majority of Indians in the rural areas, radio is only source of news and entertainment. Radio news can be heard anywhere using an inexpensive receiver. Even the most economically backward sections can afford to use the medium of radio. Radio speaks to individual, an intimate medium. रेडियो एक व्यक्तिगत माध्यम है। Unlike TV, where viewer is observing something coming out of the box over there, the sight and sound of radio are created within us and can have greater impact and involvement. To the listener, it seems that as if the broadcaster is broadcasting for each listener individually. श्रोता को ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रसारक प्रत्येक श्रोता के लिए अलग-अलग प्रसारण कर रही हूं। रेडियो व्यक्ति से बातचीत, संगीत, कहानी एवं नाटकों के माध्यम से भावनात्मक संबंध स्थापित करता है। यह सब जीवंत होता है। इसी कारण यह एक जन माध्यम होते हुए भी व्यक्तिगत माध्यम के रूप में जाना जाता है। रेडियो एक लचीला माध्यम है। रेडियो इज लेस डिमांडिंग मीडियम in that it permits to do other things also at the same time. यह एक लचीला माध्यम इसलिए भी है क्योंकि रेडियो सुनते समय व्यक्ति के किसी भी कार्य में बाधा नहीं पहुंचती। इसे सुनने के लिए अलग से समय देने की आवश्यकता भी नहीं होती। अपना कोई अन्य कार्य करते हुए भी हम इसे सुन सकते हैं। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही रेडियो शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान रूप से विशाल जन माध्यम का कार्य कर रहा है। रेडियो कैन इंक्लूड द वॉइसेस ऑफ द लिसनर्स। इसमें श्रोतागणों की आवाजों को भी शामिल किया जा सकता है। एंड रेडियो हैज म्यूजिक। रेडियो में संगीत है। देयर इज प्लेंटी ऑफ म्यूजिक of different types available to people. The popular types of music are classical, light classical, devotional, folk, and film music. The range of wide variety of music relaxes and stimulates, including pleasure, excitement, or curiosity. आज हमने जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो की प्रमुख विशेषताओं का परिचय प्राप्त किया। हमने यह भी जाना कि अपनी सीमाओं के बावजूद रेडियो एक ऐसा सफल माध्यम है जिसकी पहुंच व्यापक और प्रभावी है। अपनी अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।